Okay. Good morning, everyone. Welcome to Commodity Research Club. This is our live show on Commodity Weekly Outlook. So, where we are going to cover up all about bullions, energy, base metals, and more. So, before starting, let's break down the sessions into three parts. In first half, we are going to cover the fundamental factors. This will be like we're going to discuss the core concept and essentials elements like foundations of our topic. And moving on the second part, we are going to dive with the technical analysis to make it more interactive. I'll share my screen with you all and we'll explore the visual data and charts together and understand the things. And last, we are going to be it will be your turn. Feel free to ask any questions. We'll be engaging in Q&A sessions, addressing all your queries, thoughts you might share and ask, right? Okay. So let's quickly start with the sessions. We'll start with the bullion updates. Like gold prices have fell slightly on Friday, staying within the narrow range as traders has leaned that towards the dollar ahead of imports, important inflation data and could affect the interest rates, right? So, and the recent move in the gold was recovered and some value on Thursday after dropping below $2,300 last week has given some bounce. However, it remained around the tight range. Third factor was the inflation data. Like traders are now focused on PCE price index data on Friday, which is going to be on Friday. So this is very important data as its Federal Reserve is going to, going to say on whether inflation and its expectation to show they can show some inflation above the annual target of Fed, which is 2%. And interest, what will be the interest rate impact? Higher interest rate would definitely negatively impact metal markets, bullion markets, because they yields there is non-yield assets, like for if interest rate is going, if there is an expectation of hike in interest rate. So what will be the expectation is earlier the expectation of interest rate cut had spur because there was a gain in metal base metal in second quarter. However, the after this, like there was an inflation risk and everything, it got loosed. So the major factor to be follow, you can say in summary, gold prices will stay within the tight range as the trader awaited for the key inflation data, which is expected to influence the interest rate. However, high interest rate is generally going to hurt the sentiments of bullion traders. So the second, we are going to cover the energy market update. So we are going to first start with the oil prices. As we can see, the oil prices have started positively on Monday. So this was partly because of dollar weakened and making oil cheaper for international buyers. Also, recently, data has suggested that the Federal Reserve might lower interest rate by September, which boosted traders' confidence in crude oil. So the first was, of course, the China concern. Despite this gain, worries about China economy has really hit the oil market. But new data shows that the business activity in China is still fragile. So the reason why oil market has crude oil has especially energy, you can say energy market has given a gains in both, especially in crude oil. We can say like throughout the June, oil prices saw a significant gain, from 66 from 70. You can see the $88 also. So you can see that was due to there is a Middle East and Russia tensions, and there was the tension raised concern about the potential disruption in oil supply, leading traders to take, of course, oil to take risk premium, right? What is the impact of weaker dollar? There is your US dollar has given a significant correction. So the weaker US dollar for the oil, it is it is good for crude oil. It make crude oil cheaper. So it encourages trader to take more risk, boosting the oil prices, right? Upcoming event for the energy is this week market attention will be focused on signaling from Federal Reserve
Like Fed Chairman Powell is scheduled to speak on Tuesday, and minutes of Fed is going of June meeting will be released on Wednesday. Additionally, Friday will see the release of key non-farm payroll data, which influence the Fed decisions on interest rate based on the labor market health. So in conclusion of, you can say, crude oil prices rose due to weaker dollar and expectation of lower interest rate. But still the concern of China economy temper the large price moment, like any large price or any there is a volatility in price momentum. Okay, so for natural gas, though the combination of high storage level and robust production seems to be negative for the natural gas prices. However, the upcoming heat wave could bring some rebound in the prices, later this week. So let's come to on base metal. Like metals traded slightly, in a tight range due to lower volumes, as investors were cautious about there was a PMI data, Chinese manufacturing PMI data to be released. Overall, the month ended negatively for metals, like copper fell 1%, and zinc also, there was a rise of 4%, but though it has shown a significant correction also. Aluminium and lead was in gain of 1%. So the weak copper performance was due to the, you can say, the bearish sentiments was because of the Shanghai future exchange inventories has declined. That is from high of 3,22,900 tons. And NME approved warehouse stock has also surged to 60%. So that's a main reason where the copper prices have seen the significant corrections. And overall, the US core PCE price index for May has increased 2.6 by year, and which is there is a smallest rise. You cannot say there is a big rise since like March 2021, and this led traders to bet that on the Federal Reserve rate cut, but officials cause that has cautions like that it's too early to cut due to ongoing inflation concerns, and there is silence in economy. So the copper prices initially has rose but fell at the end of the sessions due to weak consumption. And a lower US dollar index may support the copper prices. So today you can focus on metal, like US PMI data, manufacturing PMI data is there. That will be the main focus. So that's what all about the fundamental factors to be considered during the week. Let's take to the second part, which is the, I'm going to share my screen with you all and give you the outlook of technical outlook for the week. And I'm going to share my screen, just a second. Okay. So hope everyone can visible my screen. So first we are going to see what is there in gold. So आप देख सकते हैं कि गोल्ड में यू कैन सी लाइक उसने जब एक रेंज बॉन्ड मूव हुआ है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट बिग मूव इन गोल्ड, बट वी कैन सी कि वो जो प्राइसेस हैं यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि लोअर हाइज ही बना रहा है. लाइक इट हिट द ऑल टाइम हाई अराउंड 74,400. उसके बाद से आप देखोगे कि एक करेक्शन आता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर एक बड़ा करेक्शन आता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है, फिर एक थोड़ा सा ऐसा मूव आता है और अब साइडवेज हो गया है. तो दैट्स व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग के price bullions में there will be no major big upside, right? और अभी there is a confirmation, you can see there is a bearish crossover. I'll just zoom that part, just a second. As you can see here, there is a bearish crossover. So यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि मार्केट ने एक
सपोर्ट लिया है अच्छा खासा, जहां पे यू कैन से कि इसका एक मेजर सपोर्ट जोन है, हाँ, यहाँ पे। बट वहां से वो सिग्निफिकेंटली नीचे भी नहीं आ रहा है, और वो पुश कर रहा है और साइडवेज हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इज स्टिल कंफ्यूज्ड। वी आर एक्सपेक्टिंग सम मेजर ट्रिगर्स, लाइक देयर माइट बी एनी इकोनॉमिक इवेंट और इकोनॉमिक डेटा टू बूस्ट दिस प्राइसेस। अदरवाइज वो एक साइडवेज हो गए हैं, और देर इज नो मेजर, अपने जैसे मैंने फंडामेंटल्स में आपको बताया कि कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, एंड देर विल बी नो cuts in September. We are not expecting rate cuts. In fact, we are expecting a rate hike. इन्फ्लेशन स्टेबल नहीं है, बट स्टिल एक साइडवेज मोमेंटम आ गया है गोल्ड में। फंडामेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना है कि कब मेजर मूवमेंट आए। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस दैट डेज, लाइक कोई भी इवेंट्स जो होती है, और उस हिसाब से अपना हम पोजीशंस ले सकते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि गोल्ड में एक साइडवेज मोमेंटम है, और वी लाइक फॉर लाइक ये जो हम लोग देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज है। So you can see like 71, just a second, 71,800, you can say 71,900 एक मेजर रेसिस्टेंस है, और डाउनसाइड इसको 71,700, विच इज लाइक 70,800 के आसपास इसको एक सपोर्ट है। सो जैसे ही ये 70,500 के नीचे आता है, वी कैन एक्सपेक्ट अ सेकेंड लेवल विच इज योर, वो भी एक सपोर्ट जोन ही है हमारी 70,000 की। तो यू कैन अगेन एक्सपेक्ट सम बाउंस ओवर, और जैसे ही 70,000 के नीचे आता है, वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड डाउनसाइड मूव, और आप ये एक लेवल तक आके देख सकते हो जो इसने विक छोड़ा है ना, which is around high is 66,900. But that is very broader view. But we'll just talk on weekly. Weekly कैसा रह सकता है, एक टाइट रेंज में रह सकता है, और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट करना है। अगर 71,900 के ऊपर सस्टेन कर लिया, so we are going to keep our position long positions, and we'll be very cautious in making shots, because वो support पे भी है, and if there is no major data or movement or economic news, we can see the sideways to downside movement in gold. Similar with the silver, here we are going to share the view. सिल्वर आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक ये जो मैंने लाइन बनाया था, दिस इज बिकॉज ये जो वीक छोड़ा था, यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया था। This is just for an awareness. We are not recommending any buy or sell, but it is just for awareness कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था अराउंड मई 16-20, लाइक 16 to 17 के डेट पे, वहां से ब्रेकआउट करके इसने सस्टेन किया था, और बहुत दिनों बाद, लाइक आफ्टर सो मेनी डेज एक करेक्शन आया था, और 21 डेली मूविंग एवरेज के ये प्राइस नीचे आया, और तब से ये कंसोलिडेट ही कर रहा था, और एक करेक्शन फिर से हमें देखने मिला। दो वी कैन सी के प्राइस लगातार नीचे ही घटे हैं, कोई करेक्शन में उसने ब्रेकआउट नहीं दिया है, बट सिल्वर स्टिल एक अच्छे सपो एक बहुत बड़े मेजर रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर आया था। वो हमेशा से नीचे आता था, वो साइडवेज होके वो एक ऊपर मार के फिर नीचे आ जाता था। सिंस सिल्वर इज मोर वॉलेटाइल देन गोल्ड, we will suggest you to be very cautious in this silver as a commodity. पर आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट है प्राइजेस में एक सपोर्ट है जो है 86,126 का, राइट। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो कैंडल है, सो दिस हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वैसे ही प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, दो करेक्शन ले रहा था, लोगों ने लंबे लंबे सोचा होगा कि और गिरेगा, बट यहाँ से वो बाउंस किया है, और काफी यू कैन से कि ये मंडे लाइक फ्राइडे को भी इसने एक नेगेटिव कैंडल बनाया था, स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, दो इट इज नॉट इन करेक्ट पोजीशन, दिस इज नॉट इन लाइक वी कैन नॉट सजेस्ट लाइक दिस विल बी द करेक्ट पोजीशन फॉर स्पिनिंग टॉप, बट स्टिल एक बनाया था, बट आज उसने गैप डाउन दिया है, तो दैट मीन्स स्टिल देयर इज एन होप फॉर अ रिवर्सल इन सिल्वर प्राइसेस, बट वी हैव टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज वो डाउन साइड ही है। सो वी कैन एक्सपेक्ट के साइडवेज रह सकता है, और जैसे ही ये जो कैंडल का हाई है, अगर सपोज 91,600 के एक अपर रेंज है, उसी रेंज में वी कैन एक्सपेक्ट, और डाउनसाइड जो ये लो मारा था ऑलमोस्ट अराउंड 86,156 का, विच इज वेरी क्लोज टू सेम 86,126। अगर वहां से इसने रिवर्सल किया है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ साइडवेज मोमेंटम, एंड वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, और थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि कैसे आगे कैंडल फॉर्म होते हैं, और क्या फंडामेंटल्स फैक्टर्स होते हैं विच इज गोइंग टू
support silver. Otherwise, we can expect some sideways momentum. नीचे के level से buying आ सकती है, ऊपर के level से selling आ सकती है. So this week we are expecting sideways momentum in silver. गोल्ड क्रूड में क्या कर सकते हैं? क्रूड में जैसे कि हमने बताया कि 6000 का लेवल उसने तोड़ा नहीं था, राइट? वहां से उसने जो बाउंस किया है उसमें ऑलमोस्ट काफी एक बड़ा रैली दिया है, पर हम जैसे पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस ने एक सपोर्ट लिया था और लगातार कहाँ तक गया था, इसने ऑलमोस्ट हाई मारा था 70 सॉरी या 7296, ऑलमोस्ट 7300 तक, और यहाँ से ये 6000 का इसने लेवल तोड़ा नहीं था, विच इज लाइक 5950 का इसने सपोर्ट लिया था. तो ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा 800-900 का रुपए का एमसीएक्स में एक रैली आया था. तो वैसे ही प्राइस यहाँ पे आया था 6000 के आसपास, और जो यहाँ से इसने एक बुलिश हैमर बना के जो ये भागा है, और सब लोगों को लगा होगा कि माइट इट हैज दिस इज द रेसिस्टेंस जोन, यहाँ को ये जो है 6750 एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस था, ये शायद नहीं तोड़ता, बट उसने उसको तोड़ के अब कंसोलिडेट हो रहा है. तो देर इज अ चांस कि अगर जैसे हमने फंडामेंटल फैक्टर्स आप लोगों को बताए कि क्रूड ऑयल में क्यों लाइक व्हाई देर इज स्टिल जो पॉलिटिक्स लाइक मिडिल ईस्ट और रशिया में जो चल रहा है, उसके वजह से जो सपोर्टिव प्रीमियम पे है, तो वो सब की वजह से उसने इतना रैली दिया है और एक अभी शांत हो गया है और साइडवेज चला गया है, बट स्टिल इट इज सस्टेनिंग वेरी वेल अबाउ 6700 levels. So we are not bearish on crude oil. We can still see the upside momentum. अगर वो नीचे आता है 6500 तक भी, तो ये जो आप देख सकते हो कितने सारे मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है, और 200 दिन का मूविंग एवरेज आ रहा है 6580 पर, सो विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. अगर आपको ये मिल जाता है, अगर नीचे आ जाता है कोई भी like due to any reason, so there will be a good bounce in the prices. You can expect an upside move, और यहाँ पे हमें देखने मिल सकता है कि ये नेक्स्ट जो लेवल है हमारा 7440 तक जा सकता है, और उसके अगर ऊपर और सस्टेन करता है तो ये 71200 तक भी जा सकता है. एंड डाउन साइड देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नियर 6700 6500. सो वी आर sideways to upside in क्रूड ऑयल. नेचुरल गैस में क्या हुआ है, जैसे हमने फंडामेंटली बताया है कि काफी सप्लाई है, इन्वेंट्रीज स्टोरेज ज्यादा है, सब है, तो प्राइस आर नेगेटिव फॉर नेचुरल गैस, राइट? और आपने देखा होगा कि एक अच्छा खासा मूव आया था, वो सब एंटिसिपेशन में आया था कि देयर विल बी अ देयर विल बी अ क्लाइमेट रीजन, बट आप देख सकते हो कि उसने ये हाई क्रॉस नहीं किया, जो प्रीवियस इसने हाई मारा था दिस वन, इसने क्रॉस नहीं किया, वो यहाँ से ही रिवर्सल दिखा दिया है और 21 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, विच इज लाइक 230 के नीचे ही सस्टेन कर रहा है. तो अभी से बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है 206 का. 206 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. अगर ये वहां ये टूटना नहीं चाहिए, एक बार हम वहां से एक बाउंस बैक देख सकते हैं, बिकॉज एक प्रीवियस लो भी इसने मारा था, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, वहां से इसने फिर से एक रैली दी थी. तो हो सकता है कि ब्रेकआउट देने के बाद ये अपर लेवल्स पे तो टिक नहीं पाया, हो सकता है ये सपोर्ट पे टिक जाए, तो 206 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से वी कैन एक्सपेक्ट अ अपसाइड मोमेंटम, और एक बार फिर से ये एक 260 जा सकता है. सो वी आर नॉट वेरी स्ट्रांगली bullish on natural gas. There will be sideways momentum, and of course if it is down to 206 to 205 level, 200 levels, there will be a good bounce and we can expect a sideways to upside movement from downside level. And suppose if it is coming around 40, like 240 to 230, we can see the selling momentum, right? So for a week you can see 205 206 as a support and upside 230 to 240 as a major resistance. So let's come to the copper. जैसे आप फंडामेंटली बताया है कि कॉपर की इन्वेंट्रीज जो है वो काफी बड़ी हुई हैं, इट्स दैट्स व्हाई हमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला है. कॉपर प्राइसेस ऑलमोस्ट कितने का हाई था, ऑलमोस्ट 240 945 का हाई था, और वहां से ये 100 रुपए से ज्यादा करेक्शन दे चुका है. एक नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है, प्राइसेस लगातार नीचे जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि कॉपर में ही खास करके इन्वेंट्रीज का
प्रॉब्लम आया है, लाइक देयर इज हाई इन्वेंट्री सप्लाई इश्यूज हो गया है, लाइक सप्लाई कंसर्न ज्यादा है, एंड देयर इज चाइना के डेटा जो है वो इट्स नॉट दैट वेरी गुड, स्टिल मार्केट इज वेरी फ्रेजाइल, बट कॉपर के लिए खास करके इसके लिए था बिकॉज उसमें इन्वेंट्रीज काफी ज्यादा हो गई हैं। तो यही रीजन था, और टेक्निकली भी आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला है, बट प्राइसेस जो हैं एक अच्छा सपोर्ट लेते हैं हमेशा। आप देख सकते हैं ये लाल लाल जो कैंडल्स हैं, ये साइड एक अच्छा डिमांड जोन होता है। सो दिस इज द डिमांड जोन, ये है कि 821 जो है ये स्टिल एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन लेवल अपना सेट कर सकते हो। और नीचे अगर और जाता है तो 814 is still a good support. So right now copper is at very support level. We are not expecting very downside more move in copper, और इसको एक 100 डेज सपोर्ट भी आ रहा है 816 पे। तो आप देख सकते हैं 800 और 816 20 तक एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कॉपर के लिए टेक्निकली। सो जैसे ही अगर कुछ फंडामेंटल्स पॉजिटिव हो जाते हैं या चाइना का स्टिमुलस आ जाता है, जो ये मंथ वो अनाउंस करने वाले हैं, देयर विल बी सम स्टिमुलस फ्रॉम चाइना, तो एक हम लोग ये वीक देख सकते हैं कि थोड़ा साइडवेज टू अपसाइड भी आ सकता है। सो डाउनसाइड any level from 820 to 800 there will be a good support, and upside 850 to 868 is a major resistance, right? So that's what all about copper. We are going to take one more chart which is of zinc इन मेटल। जिंक आपने देखा होगा कि कॉपर के मुकाबले जिंक, एल्यूमिनियम और लेड में इतना करेक्शन नहीं देखने मिला है। वो रीजन ये है कि वही चाइना के एक स्टिमुलस पैकेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कॉपर में जो था वो इन्वेंट्रीज इश्यूज ही था, तो दैट्स व्हाई। और बाकी इतना मेजर कोई रीजन नहीं था बेस मेटल्स के करेक्शन के लिए। सो स्टिल वी कैन सी जिंक में दो एक नेगेटिव कैंडल बना है, बट still 861 is a strong support, 859 is a strong support, and upside you can see still it is trading below resistance. So upside ये जो candle हमने last week का जो high है, we have to keep in mind, which is around, just a second, so 268 could be a 266, and 268 will be the major resistance, right? So that's all about technical outlook for the week. So we'll come to the last part of the session where we are going to take up the queries. Like we already have some queries, right? What Disha has asked something, what will be the what impact will new budget have on the gold market? Of course, Disha, there would be a major impact, like वो duties बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसका impact gold पे दिखता है, but that is very temporary since हम लोग अभी we major follow international market for bullions, as we are a still price taker, so we have to follow the international events more than the macro economy. Of course, it is very important. It has a huge impact on gold and six prices of gold. But still, we are we are not expecting. We should follow more fundamental factors, and that impacts a lot on gold prices. So So before concluding the sessions, I want everyone to update, like we are going to come live every Monday or Tuesday. We are going to give the outlook for a week. हम आपके लिए एक आउटलुक वीकली आउटलुक जैसे अभी आपने देखा कि एक फंडामेंटल टेक्निकल ओवरऑल हम लोगों ने व्यू दिया है ओवरऑल वीक का. सो वी आर गोइंग टू कम अप विथ every week this kind of content. So I would request everyone to stay tuned with us, and जिसे भी एक ओवरऑल व्यू चाहिए मार्केट का, तो आप ये हमारा जो सेशन है उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं. एंड इट्स वेरी इट विल बी वेरी encouraging us to come up with more new topics. अगर आपको कुछ चाहिए कि हम और एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक. So this is our
I guess we should. There is no questions. Okay, so I guess we should conclude now. And thank you, everyone. Thank you for joining us for this week's sessions on commodity, and we appreciate your participation and hope you found this information valuable. Stay tuned for more update and insight in our upcoming session. Have a great week ahead. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.